हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्वात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 126वां अध्याय। पश्चिम दिशा में जो विपश्चित गया था वह स्वर्णमय देश में भगवान विष्णु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उसको मुक्ति मिल गई। और कल हम देखे मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति का स्वरूप क्या है। Yesterday we saw the Vipaschit who went in western direction. He got initiation from Lord Vishnu itself, and he got knowledge of self, and he was liberated. And indirectly we can say he saw the end of the creation. That means no more creation. Mukti, the liberation, self-knowledge is end of creation. Indirectly we can say like this. You can come here, why are you hiding yourself? Come here. Yes, sit freely. If you want more space, I can arrange 10 feet by 10 feet. Thank you. Be comfortable. Are you able to understand something we are discussing? Okay. Thank you.
or else it will be time pass. इसमें जो कोई आते हैं पहले पहले इसके अंदर घुसने के लिए 2-4 दिन लगता है। बिल्कुल, आकाश किसको कहते हैं, क्या है आकाश, क्या है? जबकि हम सब जानते हैं आकाश, बच्चा भी जानता है आकाश, पर हम समझते क्या? यही तो बात। हम कौन सा चीज को समझते हैं, किस चीज को समझते हैं? हाँ, माता जी is telling she took 2 months to understand what is sky. Though everybody, even the greatest fool knows what is sky, but she took 2 months to understand what is sky. So my question was, what do we understand really? Do we understand anything? So a single word we don't understand. We understand somewhat, somehow, something. If you go to the real meaning, it is something else. What we understand, it is something else. So we have seen the king who went to western side, he got liberated, and his story is ended. Now we shall talk about the king who went to eastern side. पूर्व दिशा की ओर चला हुआ विपश्चित पर्व में, विपश्चित पर्व में पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा के बिंब के पास अपने शरीर का चिरकाल तक, जब तक उसमें चंद्रत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक चंद्रमा के समान ध्यान कर पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने से चंद्रलोक में स्थित हुआ. Now we are talking about the person who went to eastern side, and there he somehow one day in full moon night he sat down with a will that I want to become moon and see what is moon. We have our formula in Yoga, Patanjali Yoga Sutra. If you meditate on a particular object and get oneness with it, get union with it fully, then you get to understand all about that object. We call it sanyam. Sanyam. Meditate on the sun, you will know all about the solar system. If you will meditate on the moon, you will know about stars and the the other things about the moon.
And similarly, if you meditate on some mountain, you will become so heavy and so strong. So if you meditate on river, your your speed will be so quick and you will be like the river, you will get all the all the knowledge of the water and its flow. So in this way, whatever object you meditate, you get the full knowledge of the object. And we, of course, everyone meditates, not meditates, but get contact for a moment with all the objects. It goes on changing. That is by our perception. Perception means the one thought, one wave of thought, when goes out of the body through some particular sense, say eyes, then eyes can have contact with only forms. So that thought goes out through the eyes. Eyes are gates or windows, and the thought wave goes out through this window and gets contact with only form. And that contact is for a moment only, because thought when goes out and gets obstructed by the object, it has to come back. So that coming back with some information how it got contact with the object, that information is our knowledge about the object. That is momentary and it goes on changing. This is how we see the objects outside. We hear, we see, we smell or touch or taste, all these. Through these senses, the mind waves go out and get contact with the particular objects of the particular sense for a moment and come back with the impression or the information of the object, and those impressions are never dead, never destroyed. They are accumulated in the subtlemost part of the subconscious mind, and that is our storehouse of knowledge. So we know about our sense objects around us, but it is nothing. It is momentary, changeable, and it is not enough. Because we have contact for a moment, partial contact. And if the thought wave remains with the object totally not coming back, so it becomes one with, it gets saturated with that object. It pervades the whole mass of the object and it becomes one with the object. Then it gets the full knowledge of the particular object. So, this is how the mind works, and we get the knowledge of our surroundings. And mostly all these things, all these knowledge or contact with the objects get repeated again and again. That's how we say
we understand, we accept, we hold the idea that all these objects are real. But from different angles of vision, it seems to have the conclusion that all these objects are not real, not unreal, neither real nor unreal. It is your contact, what you understand, that is up to you. If you don't contact with the form and the name sound, if you don't have any contact with the overlapping name and form of the object, then when the name and object is taken out, the inner juice, reality, that is, we call it ras. Ras means the essence which is inside. That is called reality, which never changes. That is existence and knowledge and bliss absolute. And that object, real object, inner object, which is never destructible, that is same everywhere with all the objects. All the objects are same. They are not different from each other. But the names and forms which are overlapping a particular object, they only change. Overlapping object, name and form changes, but the inner existence and awareness of existence and bliss, which is the reality that never changes, that is same everywhere. For example, we have seen, say you go to the market and purchase some fruits. Good example is banana. Banana you have purchased. So what will you do? You have to eat it. What for you purchase the bananas? To eat. Somebody will eat. Eating means enjoying it. Enjoying means either good or bad, pain or pleasure. And that happens only when you throw the outer skin of the fruit and enjoy the inner pulp. You purchase the fruit by seeing the overlapping skin, color of it, name of it, and you had a transaction with the outer skin, that is form and name of it. The name of the fruit is banana. And if you say, I want a dozen of bananas, then only the fruit seller will give you banana. He will not give you papaya. He will not give you other fruits, because name is particularly given to some shape. And that shape is known as banana, and that has some adjectives, some qualities. It will have, if it is ripened, it will be either yellow, or sometimes it is reddish yellow, sometimes something, some color will be there, some size will be there, and
many things, weight or number of fruits also. Many qualities belong to the object which is known as, named as banana. It has got a name and a form with all the qualities, all the adjectives. When you wanted to enjoy it, what do you do? You throw the name and form aside and enjoy the reality, the essence of it, isn't it? So that is the reality, and when you enjoy it, means eat it, taste it, you get some experience. You go on eating bananas for your life, whole life, you will get the same experience. It will never change. But bananas will change. Means name will change, form will change. Sometimes it is ripened, sometimes it is raw. All these names and forms they change, but the inner pulp what you have enjoyed once will never change. That is unchanging experience which is ever existing, that is known as the reality. That never changes. And similarly, if you tasted honey and same honey I tasted or many hundreds tasted the same honey, everybody will have same experience. But when you express how does honey taste, then you will talk in Japanese, I will talk in Pahadi language, he will talk in Dutch, he will talk in Germany, he will talk in some other language. Language will change, your expression, style of expression will change, everything will be different from each other. But the experience of your taste will be same. It never changes. The unchanging fact is called truth, and which changes is called no truth. It is not the reality. That is everywhere we see the whole world with all the names and forms which is subject to change and which is nature's nature, law of nature, that we cannot rely upon. But the reality, the object without the names and forms, they are everywhere the same, which never changes. The inner truth. So every object around us has 5 aspects. The overlapping visible aspect are 2. One is form and other is name. Form means it's the size and all qualities what we have transaction with, we deal with form. And name also. Name is given to the form according to its qualities and its everything, shape, size and color or all the qualities. Accordingly, or its other actions, what actions it does.
So according to actions and qualities, the name is given to the object. And if object will have a shape and size and its other qualities. In this way, the hiding factor over the object is nothing but name and form, which hides the inner truth, which never changes. This is how all the objects, what is around us, what is known as world, what we have our contact with, whatever may be, it will have a name and a form. So we have to deal with names and forms. That is called our relative world around us. And that is our world. We don't look for the inner truth. And that inner truth is always everywhere the same. And if you have continuous contact with the object, then you can go through the names and forms and get into the central truth that is which never changes, the reality. Just as if you want to get the inner object, say tea or coffee or anything, you have to open it out and go through the passage and you have to enter in. Then only you can get the inner object. You have contact with the inner object. Similarly, if you want to go through this a piece of wood, then you have to make a hole and enter into the inner inside. This is how when you have longer contact, continuous contact with the particular object, then you know all about its inner and outer everything. So if you are one with it, then you know all about it. So simple. And that is what we get from the teaching of Yoga Sutras and great wise men who have seen everything analytically and with experience. They have given us the way how to think, how to deal with our objects around us. So the point is, the king who went to the eastern side in some full moon night, he sat under the moonlit night and he thought about the moon only, and he meditated on moon, and he had the will to become one with the moon because it is so pleasant. Full moon night. So generally he wanted to see the truth about the moon because his inner will was to see everything in the world. He wanted to see the end of the creation. That is his inner desire. That's how all these four, they had gone to four sides to see the end of the creation. So naturally he will have the will to see what is moon and how is moon and where is it, what about it.
So he got oneness, he got union with the moon after some time when he meditated upon moon, and he became one with the moon, and he remained in lunar atmosphere, lunar plane. That means everybody has his own circle. Just as you have your own world, your own world means with objects which you deal with. That is your world. Dealing means having contact, and around you, that will be your world, which is not that for others. So everybody's world will be different from each other. Your brother is not my brother. Your country is not my country. So it differs from person to person, individual being to individual other beings. All your mental understanding, your mental dealings, or your such information what you have collected for yourself, your understanding will be different from others, naturally. And then comes time, space, and conditions, which differs always from person to person, from object to object. This way, your world will be different from others. So now, this king, eastern side king, he got oneness with the moon, and he remained there in the lunar plane. Lunar plane means wherever in the plane of existence, in that level of existence, where everywhere moon is dealt with, moon is concerned, that is lunar plane. हम कहते हैं इंद्रलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक, we call it in Indian philosophical language. So this person remained there in that realm of existence which is known as lunar plane. He remained there for some time. Now the question comes. For everything, every point will have so many questions. Have you seen the lunar plane? You know about moon? You know? I'm very affected with the moon, full moon, half moon. My mood will change, already changed by moon. I realize. It changes? Moon changes? Is it? And what about sun? Does sun change? I feel more than sun. Moon affects my mood, mentally, and the mind. Oh, moon has some connection with the mind. So they say the madman to be lunatic. Is it? So sometimes I'm afraid I will be a lunatic. Have you seen any lunatics? No. No, I am one. Take it for granted. And you are the second because you know it.
हे भगवान। Okay. So Our second Vipasit, second king became lunatic. अच्छा, तो शंका है, द क्वेश्चन नाउ कम्स, यह कथन ठीक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चित जीव जैसे योगी का ही जीव काय व्यूहों में विभक्त होकर रहता है, वैसे ही विभक्त होकर स्थित था। उसका पश्चिम विपश्चित शरीर में विष्णु भगवान को प्रसन्नता से मुक्ति होने पर कौन दूसरी पूर्व विपश्चित शरीर में चंद्रमा को उपासना द्वारा चंद्रलोक को जाएगा। एक ही जीव की कहीं कहीं पर मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे मानने से मुक्ति रूप फल पाक्षिक और परिच्छिन्न हो जाएगा। यह भी संभव नहीं है कि एक जीव यदि 4 शरीर धारण करे तो उसके 4 जीव हो जाएंगे, अथवा अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पक्ष में तो यानी 4 विभाग मानने पर पूर्व जीव के नाश की आपत्ति आएगी। दूसरे पक्ष में नए उत्पन्न हुए जीवों को काम कर्म वासना आदि बीज के अभाव में संसार प्राप्ति नहीं होगी। यदि कहो कि जैसे भोग वैचित्र्य का कर्मों द्वारा या माया से बिना किसी विरोध के निर्वाह होता है, वैसे ही बंध्य मोक्ष वैचित्र्य का भी कर्मों द्वारा या माया से निर्वाह हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम तो मोक्ष कर्माधीन नहीं है, दूसरे मोक्ष में सकल माया निवृत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आएगा। अभी इतना को समझो, हमारे पास बहुत चीज आ गया शंका करने के लिए। शंका क्या क्या कर रहे हैं? शंका तो बहुत है, ये 2 पेज शंका है। We have so many doubts when he said the Eastern king got realization, he got united with the absolute truth and never to return by the grace of Lord Vishnu. And the western side king, he has oneness with moon, and he has gone to lunar plane, and
he will return back, because moon is not the truth. But Vishnu also is not the absolute truth. Vishnu means a quality. What is the quality? Vishnu means pervasiveness. It is a quality which is ever expanded, ever expanding, and present everywhere, all round, ever eternal presence is now known as Vishnu. So it is a quality, isn't it? One who goes to Vishnu Lok or to the plane of Lord Vishnu, either he will go up or down. Abrahma bhuvana loke punaravartino Arjuna. The Satya Lok, Brahma, Vishnu Lok, Vaikunth, everywhere. Either they will merge in the absolute, or they have to come down to the earthly plane. They cannot remain there eternally as Vishnu. Of course, they may remain there as Lord Vishnu for a pretty long time, for ages and ages, what we cannot imagine, but not eternally. So now he has got union with the absolute nirvana और कैवल्य मुक्ति मिल गया है. He has attained the union with the absolute one, and the second has gone to the lunar plane and he is enjoying there. It is said, one who goes to lunar plane, he enjoys most. क्यों? चंद्रमा सबको आनंद देता है. चंद्रमा को देखते ही आनंद आता है. चंद्रमा को कहा गया बड़ा सुंदर है, अति सुंदर. देवताओं में सबसे सुंदर है चंद्रमा. और चंद्रमा का जो लोक है, वहाँ बहुत युगों तक जो बहुत शुभ कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, और खास करके जो उपासना वगैरह किए हैं और जो लोकोपकार किए हैं, जस कीर्ति अर्जन किए हैं, वे लोग चंद्र लोक में जा करके युगों तक आनंद उपभोग करते हैं. ये पौराणिक एक भावना सब सर्वगृहित है, सब मानते हैं ऐसा. सूर्य लोक में जो तेजस्वी लोग जाते हैं, वीर लोक है, ब्रह्म लोक है, वरुण लोक, इंद्र लोक इत्यादि इत्यादि अनेक लोकांतर हैं, जहाँ पर कर्म का स्वभाव के अनुसार जो कर्म तुम किए हो उसी के अनुसार गति होती है. और फिर गीता अष्टम अध्याय में भगवान बोले हैं, मरण समय में क्या भावना, समय क्या है, तुम्हारे अंदर भावना क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार जो मरता है उसका गति निश्चित होता है. उल्टा भी सही, गति निर्धारित करने के लिए तुम्हारे कर्मों को ही खौगला जाता है, निश्चित किया जाता है, देखा जाता है तुम कौन सा दिशा में जाना चाहते हो तो कौन सा कर्म किए हो. तो उसी के अनुसार स्वर्ग नरक इत्यादि का कल्पना किया गया. एक कल्पना खाली कल्पना नहीं, एक कल्पना से दृढ़ीभूत है. कैसे? सारा संसार तो कल्पना है.
है मैं तुम और मेरा नाम रूप, मेरा घर द्वार, मेरा संबंधी, मेरा कर्म, मेरा सब कुछ उस कल्पना ही है। और ये कल्पनाओं का समूह को हम संसार मानते हैं। और इस कल्पना के अंदर दूसरा कल्पना, मैं मर गया, अब मैं कर्म ऐसा किया हूँ इसीलिए मेरा गति ऐसा होगा, मैं जाऊंगा इधर। जैसे जैसे मान लो मैं घर से निकला तो जाना है मुझे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाना है तो मुझे तो मेरा घर था कहाँ, लखनऊ। लखनऊ से बद्रीनाथ जाना है तो मुझे हरिद्वार तो अवश्य आना पड़ेगा। हरिद्वार सबको आना पड़ेगा। जो लोग कहीं से भी आएंगे बद्रीनाथ, हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आ गया। हरिद्वार में आकर के बहुत सारे और रास्ता है, कोई गंगोत्री जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई यमुनोत्री जाता है। उससे मेरे को चूज करना पड़ेगा मेरा बद्रीनाथ का रास्ता कौन सा है। उसमें भी फिर बीच बीच में बहुत पड़ाव है, कहीं कहीं रहना पड़ता है, एक दिन में तो पहुंच नहीं सकता है। उसके लिए भी मेरे को सब, और बीच में कितने अलग अलग रास्ताएं भी आएंगे। तो ये सारे चीज़ हर पल में मेरे को निर्णय लेना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है। और आखिर जाकर के आखिर पड़ाव मेरा होगा बद्रीनाथ। इसी प्रकार सबका जीवन यात्रा होता है। जो जहाँ जाना चाहता है उसी प्रकार कर्म करना, कर्म मतलब निश्चय करना पड़ेगा। और ऐसे ही चूज करना मतलब रुचि का वैचित्र इसी से है। अलग अलग रुचि, अलग अलग निश्चय करना पड़ता है। जो यमुनोत्री जाएंगे, दो भाई आए, दो दोस्त आए लखनऊ से, एक को जाना यमुनोत्री, एक को जाना बद्री, तो रास्ता हरिद्वार से या ऋषिकेश से रास्ता अलग हो जाएगा। इसी प्रकार सबका जीवन यात्रा अलग अलग होता है। तो अब ये चंद्रमा में जाकर के चंद्रलोक में रह रहा है एक, जो पश्चिम दिशा में गया, और पूर्व दिशा का जो राजा था वो हो गया, उसको मुक्ति मिल गया। इतना में हम रखते हैं। अब इसमें सवाल उठता है, विपश्चित था एक, वो विपश्चित एक था या परमात्मा एक था? एक ही बात है। परमात्मा एक है, अनेक हो गया। यहाँ तो हम चार कहते हैं, अरे चार हुआ तो 16 भी होगा। है कि नहीं? तो एक भी पश्चित चार हुआ और एक परमात्मा अनेक हुआ, बात एक ही है कि नहीं? तो वहाँ सवाल आता है, जब ये एक था, इसका तो डीएनए तो एक ही होगा ना। एक था सबका मूलभूत रूप, नाम, सब कुछ, और जितने सब वासना और जो संकल्प विकल्प मन प्राण सब कुछ एक था। राजा भी पश्चित था एक, वो हुआ चार। कैसे? इच्छा से, इच्छा शक्ति से। इच्छा क्या थी उसका? उसकी इच्छा क्या थी? इच्छा थी कि शत्रु विजय, शत्रु विजय मूलभूत इच्छा थी। असमर्थ होने से समर्पण किया, अग्निदेव जो उसका इष्ट देवता, और इष्ट देवता का वर प्रसाद से वो चार होकर के यज्ञ कुंड से वो समर्पण किया। समर्पण मतलब सर्वस्व त्याग। सर्वस्व त्याग मतलब पूरा अपना शरीर, अपना सिर को आहुति दिया। तो
अग्निदेव खुश हुए। सर्व त्याग, और सर्व त्याग के बाद और कुछ रहता नहीं। जो कुछ कामना अगर कहीं रह गया तो वो कामना अवश्य पूर्ति होगा, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं रहा। सर्व त्याग हमारा कौन ये किया था ना, यमराज के पास कौन गया था? नाचिकेता। नाचिकेता का बाप वो एक ऋषि थे, वो सर्व त्याग यज्ञ कर रहे थे, और वो एक बूढ़े, सर्व त्याग मतलब क्या? सर्व त्याग अपना लिटरली लिए सब कुछ, एक एक चीज दान करना। एक गाय दान करना है, गोदान करना, सारे गायों को दान करना या गाय दान करना, गोदान हो जाएगा। तो जो जैसे जैसे आजकल नेता लोग कुछ बोल देते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके ना उसका अर्थ को अनर्थ करके कहीं को कुछ कर देते हैं। ये तो शब्द जाल है। सारे दुनिया इस जाल से फंसे हुए हैं। कल वो अस्पताल के बच्चे लोग आए थे, उनको मैं पागल बनाया। मैं कहा मैं मैजिक दिखाऊंगा तुमको, तुम कुछ भी कहो उसको मैं ठीक उल्टा कर दूंगा। वो कहा पूरब, मैं कहा पूरब का कोई अर्थ थोड़ी होता, पूरब का अर्थ पश्चिम है। कैसे? अरे पूरब में सूर्य उदय हुआ मतलब कोई एक पहाड़ के ऊपर सूर्य उदय हुआ, उसके पूरब को और चल जाएंगे अगर 50 किलोमीटर वो पहाड़, तो पश्चिम हो जाएगा। तो सूरज पूरब में उदय हुआ या पश्चिम में उदय हुआ? वो पहाड़ के ऊपर तुम कहते हो वो पूरब दिशा है, वो पहाड़ कोई पूरब दिशा होता है? दिशा का कोई निश्चितता है कोई? जो तुम्हारे लिए पूरब होगा वो हमारे लिए पश्चिम हो जाएगा। ये शब्दों का खेल देखो कैसा। तो कहना क्या था, ये जो हम विचार कर रहे थे, एक अनेक होना, एक था उसका, एक इच्छा थी मैं शत्रु विजय करूं, और वो नहीं कर पाना, सामर्थ्य नहीं होने के पास लिए समर्पण किया, सर्वत्याग किया। सर्वत्याग मतलब नाचिकेता का बाप, वो एक बुढ़ी गौ दान किया था। नाचिकेता कंप्लेन किया, पिताजी आप क्या कर रहे हो? हैं गौ, ऐसा ये गौ दान होता है क्या? ये तो बुढ़ी है, ना दूध दे सकता है ना कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छल कपट के साथ कोई कर्म नहीं करते हैं। तो वो डांट दिया पिताजी, चुप रहो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा तुम सर्वत्याग कर रहे हो एक बुढ़ी गाय दान करके, तो मैं भी तो तुम्हारा संपत्ति हूँ, मेरे को किसको दोगे? पिताजी को, बुढ़ा को आया गुस्सा, तेरे को जाम को दूंगा, मरेगा तू। साला मेरे साथ बात करता रहे। हाय नाचिकेता कहा जैसे राम जी बच्चन को पालन करने के लिए जंगल में चले गए, ऐसा नाचिकेता कहा ठीक है मैं जाता हूँ जम के पास। गया और अपने योग बल से जमराज के पास जाकर पहुंचा। ऋषि कुमार सब कुछ कर सकता है। जमराज पूछे, पहले तो जम दर्शन नहीं दिए, फिर भी कभी वो जमराज समझ गए ये हठी लड़का आ रखा है, ये कुछ करेगा नटखटी। ये बालकृष्ण हमारा छोटा बच्चा लग गया, मुझे साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, उसके लिए सारा एक साइकिल लाना पड़ा। क्या करे? तो नाचिकेता को फिर बाद में ब्रह्म ज्ञान दिए, फिर सब कुछ जो कुछ हुआ
परंतु सर्वत्याग जो है, ये विपश्चित जो सर्वत्याग किया, इससे में सर्वत्याग नहीं हुआ। सर्वत्याग एक आशा के लिए दूसरे आशाओं को त्याग किया, ये भी एक किस्म का सर्वत्याग। एक किस्म का, पूर्ण नहीं। तो वो इच्छा उसकी थी कि मैं शत्रु पर विजय करूं, तो इसीलिए अपना शरीर को त्याग दिया, जैसे रावण भी किया था। और बहुत सारे राक्षस लोग ऐसे ही करते हैं, बड़ा भारी त्याग करते हैं, लेकिन एक इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये जब त्याग किया तो चारों दिशा में शत्रु पराजय करने के लिए भगवान अग्निदेव जो यज्ञ पुरुष हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, तो वह उसको 4 रूप दे के दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य ज्ञान के साथ चारों बना दिया, ताकि चारों दिशाओं में शत्रु को जय करेगा। किया और किया, चारों दिशा में गया। लेकिन उस समय जो 4 बना, वो 4 कैसे बने? 4 बने, रूप 4 था परंतु इच्छा एक ही, और चारों का सब कुछ बराबर एक ही था। रूप 4 हिस्सा में बंट गया, बात सही है, परंतु उनका जो गठन, उनका जो भावना, जैसे भावना होता है ऐसा शरीर का गठन होता है। मान लो एक तुम्हारे चाकू है छोटा सा, तो चाकू के लिए एक बेंट चाहिए, उसको प्लास्टिक का हो या लकड़ी का हो, कुछ बेंट लगाओगे, और लोहे का बेंट लगाओगे तो उसको बंद करने के लिए भी चाहिए। तो जैसे चीज होगा, वस्तु जैसे होगा, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके अनुसार उसका रूप को बनाया जाता है, रूप का आकलन किया जाता है। एक पेन है, पेन लिखेंगे तो अगर स्याही वाला पेन है तो उसके ऊपर तो एक ढक्कन जरूरी चाहिए। और वो डॉट पेन हुआ, डॉट पेन होने से कभी ढक्कन नहीं रखने से भी हो जाता है, परंतु रखने से अच्छा है, उसके अनुसार उसका डिजाइन होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो जैसे पेपर उड़ जाता है, उसके ऊपर पेपर वेट का रूप रेख कैसा बनेगा, उसके अनुसार उसका रूप का आकलन किया जाता है। हर चीज में काम, उसका इच्छा क्या है, उसका कर्म कैसा होगा, उसके आचरण कैसे होगा, चरित्र कैसा होगा, इसको समझ करके रूप को संकलन कल्पना किया जाता है। जिसका जैसे कर्म होगा उसके अनुसार किस परिवार में वो पैदा होगा और कैसा शरीर उसको प्राप्त होगा। जोगी होगा तो जोगियों के परिवार में, कोई कर्मकांडी होगा किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म होगा, कोई शिल्पकार होगा मर गया तो किसी बढ़ई या कोई लोहार या किसी के परिवार में जन्म लेगा। इसी के अनुसार विपश्चित का जो इच्छा थी, एक ही इच्छा जय करना, शत्रु जय करना, इसीलिए चारों का शरीर एक जैसे था, इच्छा भी एक, कर्म भी एक, इसीलिए शरीर भी एक जैसे रहा। ये सब बहुत बारीकी सब विचार करना चाहिए, नहीं तो हर वक्त शंका हमको आएगा। अच्छा, तो 4 शरीर तो हो गया, और वो चारों दिशाओं में सारे शत्रुओं को जय करके जब समुद्र जो
जमीन का आखिरी सीमा में समुद्र मिलता है। तो समुद्र के पास जब जा कर के प्रकृति का दृश्य के मुग्ध हुए, प्रकृति का आनंद उठाए, उनके सहचर जो थे वो लोग उनको समझाए, प्रकृति का दर्शन करवाए, तो उस सबके मन में एक ही इच्छा जगी, क्योंकि सब बराबर थे। एक ही इच्छा जगी कि चलो सृष्टि का सौंदर्य का, सृष्टि का अंत देखेंगे। ये तो था, यहाँ तक सब बराबर चल रहा है। अब बिचारा, पर दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग, शरीर एक, इच्छा एक, रूप एक, कर्म अलग में होता, अलग होता हुआ एक है। इच्छा तो एक है, सृष्टि का अंत देखेंगे, पर दिशा अलग अलग है। अच्छा, धीरे धीरे अभी बाइफरकेशन शुरू हुआ। एक में अनेकता कैसे आता है? ये जो आजकल सब रोबोट वगैरह सब बनाते हैं ना, मशीन से सब काम करते हैं, आधुनिक युग, ये आज की बात नहीं। हम आधुनिक युग में, अरे हम बड़े वैज्ञानिक हैं और बहुत कुछ जानकार है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमारे ऋषि मुनि लोग पहले सब कुछ सकल कर्म करी थके होंगे साईं, सब कुछ करते हुए भी और सबको त्याग भी किए हैं। और इसको, इससे समाज में विभ्रम पैदा हो जाएगा, इसको सब अपने इच्छा के कंट्रोल नहीं रखेंगे, इसीलिए उसको गुप्त रखे, सबको नहीं बताए। पहले ज़माने में इसी में हमारा कहानी आता है, जब असुर देवासुर संग्राम हुआ एक बार, कभी बहुत बार होता है, होना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक? अरे भाई, दो अपोजिट तो लड़ना है, यही तो दुनिया का खेल है। दो अपोजिट तो लड़ेंगे, हैं? दो हो गए तो आपस में लड़ाई होगी। कंपैरिजन इज फाइट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। We are talking about the facts and figures, possibilities on how one becomes four and yet keeps equanimity in all those four, and yet there will be dualism. One becomes four and they will be same, they are not different from each other, and yet there will be difference. This is where our complicacy arises. This is called relativity. One is within the other and out of the other. That is the confusion. You are inside also and you are outside also. How is it? This is difficult to understand. We don't keep in mind always all these analytical views, but we go on with whatever ideas come to our mind. See, you are inside also, outside also, at the same time, both are in you. This is called relativity. When you are compared with one, you are outside. When it is compared with other, you are inside. Say, in a paper, put a line. Always we
give this example. One line, it is neither big nor small. One line has no qualities, no comparison. That's how it is beyond all the qualities. The moment another line comes near it, the first line will be either big or small. So all these qualities come forth, and then there will be so many length, breadth, height, or uh, so many qualities, innumerable qualities, and that all qualities are dependent on comparison only. How, where, with what you are comparing, that's how you get the qualities. The moment the two starts, then there will be difference. Here one became four. Why we are always confused, and why we are in illusory maya in this world, which we are unable to understand anything clearly. There is no clearance in anything. Always there is confusion. Why? Because always the questions are there. How one became many, and what relation, where you are going to compare. At best you can compare two at a time. So when you compare, others are uncompared, then that becomes a cause for confusion. So now one became four, and they have oneness, and yet they have difference. There is the complication. My experience is outside, liberation is inside. It is beyond my understanding. Liberation, I have not yet understood what is liberation. How can I tell you it is outside or inside? You have to decide. Your liberation to be decided by you only. My liberation will be different from your liberation. This is also a question. Your liberation and my liberation. You have some ideas about liberation, and I have some different ideas. Every ideas will be different from each other. So your liberation will be different from my liberation. I will be liberated in lunatic plane. And you will be liberated in solar plane. Okay? And now you have to decide whether it is outside or inside. See, now our point is, one became four, and four are in some respect, in some qualities they are same, in some other qualities they are different. They have the same desire to see the end of the creation, but directions are different. So always there will be difference in no difference, and no difference in difference. That is the cause for all the confusions. Now, here the question is on the scriptural, you say, logic, philosophical logic. How can you have difference in no difference at a time? He puts the question. See,
ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चित जीव जैसे योगी का ही जीव काय व्यूहों में विभक्त होकर रहता है, वैसे ही विभक्त होकर स्थित था। इतना ही पहले समझो। Whether you are one or many, how many you are? Two. How are you? I am fine. How many are you? Who am I? The question is so complicated. I am one, at the same time I am many. How? I have some ideas of the body. I am the body. Body means a group, the head of the group. Head is one, but body is many. Body means parts of the head which are connected to head. The parts are many. Hands, one hand, but many parts. Fingers, one finger, many phalanges, and one phalange, nail also, inside also, lines also, up and down, thickness, length, many things are there. So every one, when we see one, one becomes many. Seeing is a process, we have discussed it many times. Seeing is a process. When you go with the process, everywhere you will get bifurcations. When you are going in a road, everywhere you will have different roads. Some road goes to the village, some road go to the jungle, some road go to the riverside, some road go to the say cowshed. So many directions, but road is one. You are going every moment. You will get bifurcations. This is how the journey is known, or the process of going or advancing or say present becoming future or past becoming present and present becoming future, or you are going in your life's journey, you are advancing forward, everywhere there will be complications. You have to, every moment you have to decide one between the two. That is what our mind does, intellect does. Nishchayatmika buddhi. Every moment we get two, and out of two we have to decide one. Understood now? That is how our intellect works. Every moment you have to decide one among the two. Now, he says, one body will have many parts. So, you are one from one angle of vision, and from different angle you are many. Understood? I am one. My name is one. My form is one. And that holds many manyness within it. Many manyness. Page is one. Sentences are many.
Sentence is one, words are many. Word is one, alphabets are many. Alphabet is one, its parts are many. Everyone, when you deal with one or you see one, you contact one, that becomes many. One tree, see one tree, is it one? It will have so many manyness within it. Every one, when you look at it, when we deal with it, when you have any contact with it, then it becomes complicated, it becomes one and many at a time. At a time. If you keep quiet, no contact, then one remains one. If you express it, you have to see it, you have to deal with it, that is called dualism, that is called relative world, that is always will be among two with comparison, with relation. That's how the whole world is, whole creation is situated or composed by pairs of opposites, so you cannot avoid it. So now, four are they, but they have one idea. And those idea is one, but directions are many. So direction is one, but visions are many. They have gone through so many, you see, experiences and contacts with nature, and so many lands and you see oceans and so many views. And now at the end, the Eastern Vipassana has completed his journey. He doesn't want to go any more further. That means he has abandoned his desire forever. He has gone beyond his desire forever. That is called liberation. That is called end of the creation or end of the say illusory power. There is no more bifurcation, absolute one, absolute equilibrium. Now, the second, because one becomes four, so always there will be one and two, many. One and many are together, it has to go with. So they were in different directions, and now the Western king, he has become one with the moon, and he is in lunar plane. So questions are of course reasonable and so many. He puts the question just as in one body manyness is there, and body is a totality. It is a body. Body literally means a compound, a group, that is called body. So body means one holds many. So if I have one body, there will be many, of course. Legs will be two, five senses of action, five
senses of knowledge, and the body has different parts, different organs, and desires will be many. One desire bifurcates and multiplies into many every moment. So this is the law of creation. As long as you are in the creation, means in the clutches of Maya, the illusive power, this is the power which is naturally illusive, because it is one in many, many in one. It starts with it. So it will go on with it. If we have this clear picture before us, all the questions will be solved. He is putting the body was one and it became four, and similar bodies. So they were in the one group. One body means one group. And they will have also differences in one body. So the question was, just as yogis, they hold one body, but they have control over their ideas or thought waves. They have control over their mind. They use wherever they want to use. The mind is under control. Other ordinary beings, they have no control over the mind. Mind runs naturally. Mind is a flow of thoughts. The common people have no control over the flow. The yogis have control over the flow. They direct the flow as they like. Understood now? Yogi means who have gone through the process of controlling the senses, mind and body and prana, etc. And they have control over whole group. Whole group means body, senses, mind, prana, etc. So now, yogi has also a body, and common people have also bodies. Now he says, योगी का ही जीव काय व्यूहों में विभक्त होकर रहता है. काय व्यूह, व्यूह मीन्स a safety, what व्यूह तो कहेंगे सेफ्टी, व्यूह को क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कहेंगे नहीं, Structure? Pattern or structure? Structure? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, परंतु व्यूह मतलब Sanctuary. है Sanctuary. में सेंचुरी. Sanctuary. सेफ्टी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. नो, सेफ्टी कंपोजिशन भी नहीं होगा. पूछो. अरे रेजिमेंट, रेजिमेंट इज नंबर ऑफ a group of people. Regiment, it is not the arrangement of warriors in a particular way. ऐसा कह सकते हैं. वन वर्ड क्या कहेंगे.
स्ट्रैटेजी, हाँ हो सकता है, वो भी कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है। फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन, a safety formation of warriors, that is called Vyuha. Safety formation of warriors. So here the body is formed in a particular way to have safety from outer objects which cannot attack us. That is called diseaseless formation. That means outside objects they cannot enter in. चक्र भी हो, वही तो है चक्र भी हो. Formation is a right word. Formation of what? Any safety formation. That is called Vyuha. And if it is in the war field, then it is formation of warriors. How do they stand, how do they act, all those. So body is a formation, a safety formation from outsiders. Outsiders means the air cannot enter in as it likes. It has to enter through nose only, or through mouth only, or through ear only. Where there is given way, then only. The outside dust cannot enter in the body. So, the other articles, other objects, they cannot enter in as they like, isn't it? So body is a safety formation. Safe formation of objects where outsiders cannot enter easily without permission. Okay? Body is built like that. So, what happens? Yogi remains inside, just as the king remains in the fort, inside the fort, and innermost center. And there the king, the warrior, the commander lives there. The other enemies cannot enter inside as they like. So the inside inner being, that is subtle being remains, lives inside. The body is a structure which is composed in such a way, arranged in such a way, outsiders cannot enter in as they like. So it is a particular special structure, composition. And it is composed out of 5 elements only. You are building it in, it is composed by some items, some irons, some brick, or some say mortar or cement or something. So they are the composing articles, composition. So this body is built out of 5 elements. They are the compositions. Composition articles, or composers. ठीक है, ऐसे ही कुछ कहेंगे. ये जैसे दवाई होता है ना, दवाई में क्या होता है? कंपोजिशन. कंपोजिशन कैसा होता है? एलिमेंट्स. 5 elements are the parts of composition. So in this body, the
yogi lives safe from outsiders. Okay. They call Karana Sharira. The five elements merged in, they call Karana Sharira. They are called body, फिजिकल बॉडी। तो वो कह रहे हैं वैसे ही होकर के स्थित था। वो जो विपस्थित था, एक शरीर में एक व्यक्ति था, वो था जोगी। जोगी जैसे रहता है, क्योंकि वो सेफ कैसा रहा, इष्ट देवता अग्नि देवता के कारण। हाँ, अच्छा, उसकी पश्चिम विपश्चित शरीर में विष्णु भगवान को प्रसन्नता से मुक्ति होने पर कौन दूसरा पूर्व विपश्चित शरीर में चंद्रमा की उपासना द्वारा चंद्रलोक को जाएगा। एक ही जीव की कहीं कहीं पर मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ किस प्रकार हो सकता है, इसका संभावना नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्ति रूप फल पाक्षिक हो जाएगा। इसमें तकलीफ क्या है? अगर द पर्सन इज वन, हाउ कैन ही, though he has body, one body, how can he will have two different achievements different than each other? One is liberated, here other is enjoying. If this is possible, you say it is possible, then mukti, liberation has got no meaning then. It will have no meaning. सब कल्पना है समझ, हाँ, कल्पना है, मुक्ति बंधन कल्पना ही है। तो वो कल्पना है, ये भी कल्पना, सब कल्पना में हम चलते हैं। सारे चीज कल्पना के अंदर, कल्पना के अंदर ही सारा युक्ति तर्क चल रहा है। कल्पना के बाहर कहाँ जाएंगे? बात करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ कल्पना के अंदर। तो यह मुक्ति मतलब निवृत्ति, पूरा छुट्टी, परंतु कामना इच्छा कुछ नहीं रहेगा। तो एक तो ऐसा मिल गया, दूसरे के अंदर कैसा कामना आ गया कि चंद्रमा में रह गया। एक को कैसा दो टुकड़ा करोगे? वो तो एक ही था, एक ही जीव था। शरीर था भले चार हो गया, कोई बात नहीं। जैसे हम एक किला के अंदर 5 आवरण के अंदर हम रहते हैं, शरीर भी ऐसे 5 कोष हैं, अंदर रहता है सब कोई। अच्छा, लेकिन वो जो अंदर एक रहा वो अनेक दो कैसा होगा? वो तो एक था, है कि नहीं? और इस चैप्टर में शुरू में पढ़े मुक्ति चित्त को मिलता है, मुक्ति कितने को मिलता है? चित्त को, बंधन भी चित्त को और मुक्त चित्त को मुक्ति मिलता है। हाँ, हम पहले विचार किए थे, चित्त को बंधन भी है, चित्त को मुक्ति है। मन को मुक्ति नहीं मिलता है, शरीर को मुक्ति नहीं मिलता है। बंधन और मुक्ति दोनों मिलेगा चित्त को, क्योंकि वही चंचल होता है और स्थिर भी होता है। तो जो स्थिर हो सकता है और अस्थिर हो सकता है, उसी का नाम बंधन मुक्ति है। आखिर हम यहाँ पहुँचे थे। The absolute steadiness is known as, absolute equilibrium state is known as liberation or
uh, or end of everything beyond your creation or illusory power or anything. That is the end, where absolute silence, absolute equilibrium. And little disturbance means there from starts the dualism or imbalanced state, or that itself known as power, energy, or sound, or creation, or mind. We have named it differently from different angles of vision. Many different opinions and views are given. So one says it was sky, some says it was the great Virat, some says it was the womb of the absolute Hiranyagarbha, the golden womb, or some way somebody has named it. We don't bother about all those, but starts from little imbalanced state. So, what we are going to see, the moment it starts disturbing, then everything becomes confused and everything becomes not clear. Everything becomes confusing because it is not in one plane. It is 360 degree into 360 degree into to the power infinity. In all directions it starts vibrating. So there is no question of having any clarity. Always there will be difference of opinion. That keeping in mind, if you go on with all these differences, whatever you say, it is possible. One will have 4, one will have 10, one will have, one person had 10 heads, and other person has had thousands of heads. Sahasrabhahu, one had thousands of hands. Anything you say, everything is possible. Why? Because it is every way you can see. From one angle you say impossible, the other angle we say it is possible. So what happens now? The question is, mukti jo hai, liberation, if you say one person will have difference, then one cannot have mukti. Because mukti, liberation, is absolute balance state. It is only one. It cannot be divided, it cannot be many. So, if one is possibly divided into many, then mukti is impossible. This is the first question. How did you say one has attained liberation and other is enjoying? It is impossible. This is the first question. And it is according to the logic. Okay. जीव की कहीं फेरे मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ कैसे हो सकता है, संभव होगा? ये भी संभव नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्ति रूप फल पाक्षिक और
परिच्छिन्न हो जाएगा, वही जो हम विचार कर रहे हैं. If you say one will have sometimes bondage and sometimes liberation, that also is impossible. Sometimes I am free and sometimes I am bound to something. Sometimes I don't obey any rules and regulations and sometimes I am bound to rules. Is it possible? Then there is no question, there is no meaning of rules. One cannot have liberation and bondage at a time in same body. Cannot. Of course, you can have many parts, that is different, but liberation means oneness, and body means enjoyment means dualism. So oneness, monoism and dualism, both cannot be in one. This is the question. How can you say so? Are you getting the point? Is it possible or not? The impossible is possible in illusion. That is the whole trouble. Now we shall come to answer afterwards. Now we are looking for the questions. What is impossible? That is the question. You have told us the story, but story is not logical. You say one is free and at the same time same, because two bodies are same, so same again is in bondage. How can you say? Can you say? Object is there, then understood that the liberation. Otherwise, who is liberation understanding? The liberation is there, then somebody is want there. Otherwise, how to understand liberation? Are bhai, liberation means oneness and world means dualism. Oneness is absolute equilibrium. World means imbalance. That's all. Clear. Now, both together, it is impossible. Both cannot be together. Same vibrations or no vibrations. Can you say like that? Wave is not wave. Can you say like that? Of course, the answer will be beautiful. Very, 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 very Lucy, juicy. If you come to logic, little let us see. Of course, whole time is gone. Again, we shall discuss on mukti, liberation and bondage are impossible according to this story. And according to this story, again, karma and karma phal also will be not as we have the ideas according to the scriptures. Action and reaction, it has got some
formula, some rule. Every action will have equal and opposite reaction. This is the rule of the nature. So this will not be successful. This rule will break. How? Just as liberation and bondage cannot be together, similarly, action and reaction will be impossible. If one is liberated, my one part is liberated and other part is in bondage. So which will do karma and get the reactions, and which will do actions and it will have reaction, other will not have reaction. How is it possible? One body, two parts, one part will have reaction and other part will not have reaction. Is it possible? When you eat, your tongue eats, so you feel two kinds of taste. Do you get two kinds of taste? Half of the tongue will get the pungency, other half will have the sweetness. Is it possible? Because one body has become two, and one is enjoying liberation, other is in the world, and one then action and reaction formula also will not be applicable. One will get reaction, other will not get reaction. That is not possible. Okay. Points, note down the points. One is liberation and bondage will be not possible, and the karma and action and reaction formula will not be possible. These are the two questions according to your story. और यदि कहो कि जैसे भोग वैचित्र्य का कर्म द्वारा या माया से बिना किसी विरोध के निर्वाह होता है, ऐसे ही बंध मोक्ष वैचित्र्य का भी कर्मों द्वारा या माया से निर्वाह हो सकता है। ऐसे भी नहीं होगा। मोक्ष में सकल माया निवृत्ति का प्रतिपादन करने वाला श्रुति से विरोध हो जाएगा। मुक्ति में बंधन नहीं हो सकता है और बंधन में मुक्ति नहीं हो सकता है। दो पॉइंट के ऊपर हमारा शंका हो रहा है कि कर्म और कर्म फल नहीं होगा और बंधन और मुक्ति ये दोनों नहीं हो सकता है। तुम्हारे कहानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी, as you go on with the bondage and liberation will be meaningless, and action and reaction formula will not be applicable. As you say, as we see it by logical view. So we shall see other questions and later on we shall go to the answer. The first question should be understood thoroughly. The question holds the answer within it. Don't pass through the questions without understanding
thoroughly. Question should be understood thoroughly well. Then only we can have the easy answers. If you don't understand the question, answer will be wrong. हो गया आज इतना। भैया, भाइयों और बहनों, क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर होता है, इसको भूलना नहीं। The question itself, when is understood thoroughly, it holds the answer, because the great seers have told, answer is first. From answer, the questions are created or derived. Answer is first and then comes question. So, if you understand the question, answer will be there within it. Try to understand the question as thorough as you can. क्या समझे? अच्छा, तुम ये तो बोलो, हमारे शरीर में सारे उत्तर भी है। शरीर को देखने से उत्तर, फिर मजा आएगा जब उत्तर का चल, वो जितने जितने क्वेश्चन पूछ रहा है सबके अंदर उत्तर है ही। एक फॉर्मूला हमारे सारे दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, एक ही फॉर्मूला। क्या वो फॉर्मूला? देखेंगे, फिर कल बात करेंगे, कल या परसों, क्योंकि क्वेश्चन तो अपार है। जड़ी लगा दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो सावन महीना बन करके आया है। कितना क्वेश्चन। अब बताओ, इसको नोट करो, सब उत्तर देंगे। शरीर में कोई या उंगली में कट गया, उंगली कट गया और खून आ रहा है। तो एक उदाहरण में दे रहा हूं, पर उत्तर में नहीं जा रहे। तो कट गया, खून आया, तो क्या करोगे? बैंडेज करोगे, दवाई लगाओगे, सारे दवाई, सारे अंगुलियों में, सारे हाथों में, पैर में, सारा शरीर में बैंडेज लगा दोगे? और दर्द कहाँ हो रहा है? घाव हुआ है एक जगह पर, दर्द हुआ सारा पैर, सारा शरीर को। सिर में तो सबसे ज्यादा हेडेक आता है, पट्टी हेड में क्यों नहीं लगाते? वहाँ दर्द, वहाँ पट्टी लगाने से सिर दर्द कैसे ठीक हो जाता है? एक सरदार था, वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जा करके कहा, डॉक्टर साहब, मेरे सारे शरीर में दर्द है और मुझे दवाई दे दो। तो वो डॉक्टर पूछा, कहाँ कहाँ दर्द है? तो वो बता रहा, यहाँ दर्द, हाँ इधर दर्द है, यहाँ दर्द है, हाँ यहाँ भी दर्द है, यहाँ दर्द है, हाँ यहाँ भी दर्द है, यहाँ, हाँ यहाँ भी दर्द है, यहाँ, हाँ यहाँ भी दर्द है, यहाँ, यहाँ जहाँ हाथ लगाता हूँ दर्द है। अरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो डॉक्टर साहब जा करके उसको लेटा दिया, देखा क्या क्या सब जांच किया, कुछ नहीं देखा। एक जगह, एक ये देखो ना मेरा उंगली में भी ये यहाँ कुछ
थोड़ा सा खून आ रखा है ना, हाँ, और मैं जहाँ लगाता हूँ वहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर देख लिया, उंगली में कहीं लगा हुआ था, और चाकू लग के खून आ गया था, और वो खून साफ भी नहीं किया, और वो बड़ा गंदा हो रखा है। उसको स्पिरिट वगैरह लगाया, बिटाडिन वगैरह लगाया, सब साफ सफाई किया और बैंडेज लगा दिया। सरदार जी अब सारे शरीर का दर्द में ठीक कर दिया ना। अच्छा कितना हुआ पैसा? इतना हुआ, जितना उसका बिल ले लिया। तो सरदार कहता है डॉक्टर साहब एक बात, जो तुम्हारा दवाई का पैसा मैं दे दिया और 20 रुपया उसके ऊपर लो, और जितना कहोगे मैं दूंगा। मेरा शरीर में तो सब जगह पर दर्द था, और तुम क्या किए, मेरे सारा शरीर से दर्द चला गया है, क्या किए ये मेरे को बताओ। पट्टी तो यहाँ लगाया और दर्द यहाँ से चला गया। ये मुझे बता दो, मैं और पैसा देने के लिए तैयार हूं। तुम बड़ा जादू जानते हो। हाँ जी, डॉक्टर लगा दिया पट्टी यहाँ, और सारे शरीर का दर्द चला गया। यह आश्चर्य सरदार लोगों के लिए बड़ा कठिन व्यापार है ये। तुम इलाज करते हो यहाँ, दर्द जाता है यहाँ से है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।